Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to upload a very important video on SLO based preparation of the computer science class 7, and I have added some important themes and thoughts, and you can just listen it just carefully, and then you will just get the many things in this video. So I have just added some important questions from all the chapters which are included in the examinations. So let's move ahead, and 30 important questions, but I have added 28 to 29 questions. The first thing is differentiate between transition and animation features in MS PowerPoint. As you know that PowerPoint is the part of our examination, so this question is very important for us. Transition and animation. Mostly students always feel the confusion that there is no difference between these two things. I will explain in English, and after that I will explain in simple Urdu. Transition, इन सिंपल वर्ड्स, ट्रांजिशन में मूवमेंट ऑफ वन स्लाइड टू अनदर, कि आपका जो स्लाइड का बैकग्राउंड है अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं तो ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे और टेक्स्ट उसके ऊपर स्टिल रहेगा. एंड एनिमेशन जो है वो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड एनिमेशन, कि आपने एक एक लाइन को मूव करना है. लाइक जैसे कि नंबर 1 इज़ अ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप जो है वो फर्स्ट पे लेके आना चाह रहे हैं. आफ्टर दैट ट्रांजिशन की हेडिंग को आप शो करना चाह रहे हैं, और उसके बाद ये लाइंस वन बाय वन ऑब्जेक्ट्स को हम शो करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एनिमेशन. एंड इफ़ यू हैव सम पिक्चर्स, सम ग्राफिक्स एंड सम क्लिप आर्ट्स, you can just use the animation for this purpose as well. But in the transition, you will move the slide, the background of the slides. Means we are switching from one slide to another slide is called transition. So I hope so this concept is clear now. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द थिसॉरस इन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. आपको पता है कि एग्जामिनेशन में जो मोस्टली वर्ड यूज़ होता है वो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंट रोल, इम्पॉर्टेंस होता है. इसका मतलब थिसॉरस का जो है इम्पॉर्टेंस क्या है आपके पास. आई हैव जस्ट prepared this answer in 3 points, 3 easy points. Thesaurus improves the writing. You can look up the synonyms and antonyms. You can replace the word with any new word. So these are the things. Number 3, what is the purpose of motion code in Scratch? How can the motion code keep duplicated for the sprite in Scratch? Scratch programming आपने की है, and Scratch is also included in our examination. तो स्क्रैच के ऊपर आपको पता है कि वी आर वर्किंग थ्रू द ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल द फीचर्स, एंड देन यू कैन जस्ट गिव द आंसर अकॉर्डिंगली. इफ़ यू आर able to work on the IDE, and the IDE is user friendly for you, then you can just and you have done your practicals on it, then you can just write down the answers in a proper way. But if you are unaware of the IDE, then you are unable to answer any concept related to the practical chapter of Scratch or different kinds of information. The motion block in the Scratch is used to move or turn sprite. Sprite का आपको पता है कि जो भी object है उसके अंदर कोई भी character है, that is called sprite. They are used to control the sprite's movement. And here is a method that how can the motion code be duplicated for the sprite in Scratch. Click on the first sprite and go its code tab. Drag the code that is in the first sprite's code area to image of the second sprite in the sprite list. Then let go of the code to finish copying it to the second sprite. पहले एक स्प्राइट की मूवमेंट अप्लाई करेंगे कोड में, एंड आफ्टर दैट आप इफ़ यू आर इंसर्टिंग एन अदर स्प्राइट, देन कॉपी दैट कोड एंड पेस्ट एज इट इज़ देयर टू रन दैट कोड. क्वेश्चन नंबर 4 इज लिस्ट द स्टेप्स टू इंसर्ट ग्राफ इन प्रेजेंटेशन. अगर आपने प्रेजेंटेशन में कोई ग्राफ बनाना है तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर. You have written down in your notebooks as well. You can use that answer, and this answer is also. So this is because the SLO based preparation, so wording can be changed, but if you have written this answer in your notebook, you can just use it. कि आपने अगर insert करना है graph presentation में, तो what is the method. Click insert chart, click the chart type, and then double click the chart you want. In the worksheet that appears, replace the placeholder data with your own information. When you insert a chart, small buttons appear next to its upper right corner. When you have finished, close the worksheet.
Then 5. How can Scratch sound blocks be used to add music and sound effects to a game? Write the steps to add movement code to a player. It's again about the Scratch. Create a new project. Choose a backdrop. पीछे background choose करेंगे. Add an instrument sprite. And when the sprite clicked, block. Add start sound block. Copy code to other sprites. Change each sprite's sound as well. Number 5. List names of 4 presentation software other than MS PowerPoint. Just keep in your mind, if they are using the word list, you have to write the names only. No description is required here. If they say that describe, list the name of the 4 presentation software and describe. Then you have to write down about these program in single line or 2 or 3 line. As you feel comfortable, you can do it. So the one is Prezi, Photo Story, Movie Maker, and Canva. I have written down these. 7 is little bit long, but it is easy if you understand it. Use loop in C to perform repetitive tasks and control the flow of your program. How do you define the function in C? Because I have added the 2 questions in this to just combine the themes, 2 themes and 1 question. So the first thing is use loop. Loop का आपको पता है कि loop is एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आपकी कंडीशन आपको राइट आंसर नहीं देती, लूप रेपिटेटिवली वर्क करता है और तब तक काम करता है जब तक कि आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो जाता. मीन्स हमें बार बार कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वी अप्लाई लूप ताकि आपका जो आंसर है जब तक आपको आंसर नहीं मिलता, लूप जो है वो कॉन्टिन्यूस वर्क करेगा. We use the loop control statement in the C language for performing various loop operations until we find the condition given in the program to be true. The control comes out of the loop statement when the condition given to us turns out to be false. उसके बाद फंक्शन क्या है? A function is a block of code which only runs when it is called. जब इसको बुलाया जाएगा, जब इसको कहा जाएगा कि फंक्शन जो है वो वर्क करे, at that time the function will work. You can pass data known as parameters into function. After that, what are the sustainable development goals? How can entrepreneurs contribute to addressing challenges of 21st century? This is from the last chapter and I think I have written the little answer here. मैं इसका आंसर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 8 का. It's the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by all the United Nations member states in 2015. और next जो है वो इंशाल्लाह I will add it. ये missing part हो गया इसका. So let's move ahead. Discuss briefly the 6 block section of the C program. एक C program अगर आप लिखते हो तो उसके अंदर 6 sections आपको मिलेंगे. उनका function क्या है? आपने first of all just आपने इनका name जो है वो याद रखना है. Here the sequence is not correct. Now let me correct the sequence. First of all 3 and here is a 4 and then 5. It was not right, so let me correct it. And then the 6th one. So this is all about, let me save this slide and after that we display it. Okay, the first thing is a documentation. सबसे ऊपर वाला जो portion होता है, set of the comment lines given the name of the program. जहाँ पे आपने कमेंट्स दिए होते हैं, जहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, दैट इज़ योर डॉक्यूमेंट सेक्शन. कमेंट्स का आपको पता है कि कमेंट्स आर डेड स्टेटमेंट्स जो किसी दूसरे पर्सन को समझाने के लिए यूज़ की जाती हैं बट वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती. और उन स्टेटमेंट्स को डेड करने के लिए हम मल्टीपल प्रोग्राम्स में मल्टीपल कमांड्स यूज़ करते हैं. जैसे कि सी में हम वी अप्लाई द 2 फॉरवर्ड स्लैशेस और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होती है वो डेड हो जाती है. Then link है, it declares the header file that we use the program. This code tells the compiler to link. Header files कौन सी? hashtag include के साथ आपकी जो start होती है और उसके बाद आपकी stdiolib लाइब्रेरी के मतलब आपकी जो कोडिंग मौजूद है उसके अंदर वो तमाम जो है वो लिंक सेक्शन में आता है. Definition defines all the symbolic constants using the hashtag define directive. Global declaration, it declares all the users defined function. फिर उसके बाद आपका main function आता है जो कि आपकी curly brackets के बाद start होता है. This section declares the 2 part, declaration part and executable part. Subprogram, it works when more than 1 functions are taking part in the program. That is, and after that, number 10, describe how an IDE facilitates a programming language and use of variables.
फर्स्ट ऑफ ऑल आईडीई क्या है? आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, आपकी वो स्क्रीन जिसके ऊपर आप फ्रेंडली काम कर रहे हैं एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट स्क्रीन, दैट इज़ योर आईडीई. सो वी ऑलवेज टेक द आईडीई एज अ यूजर फ्रेंडली if you are able to work on it, to able to play with the codes and able to run that program. So an integrated development environment is a software application that helps programmer develop software code efficiently. It increases developer productivity by combining capabilities such as software editing, building, testing, and packing, and in an easy to use application. नेक्स्ट पे आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ डू यू डिफाइन द टर्म हैकिंग? राइट टू मेयर्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट फ्रॉम इट. हैकिंग क्या चीज़ है? हैकिंग इज अन ऑथराइज्ड एक्सेस है. आपके कंप्यूटर पे कोई भी ऐसा पर्सन आपकी परमिशन के बगैर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर वो आपके डेटा को स्टील करता है, आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है, दैट इज़ कॉल्ड हैकिंग. मीन्स यू आर नॉट अलाउइंग द पीपल, आपने उसको अलाउ नहीं किया बट स्टिल ही इज़ गेटिंग योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड हैकिंग. गेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू समवन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाय एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल टूल्स. अब हम किस तरह से यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम all these measures? Applying strong privacy setting. सबसे पहले अपनी privacy setting को strong कर दें. Install antivirus software, update it properly. Install firewall. Don't open any unknown web link or any attachment. Sign out or log out your accounts after use. So this is the way. 12. List at least 3 possible dangers of internet and suggest security measures to counter them. Number 1. Cyberbullying, bullying using digital technology, invasion of privacy, identity theft, your child seeing offensive images and messages. ये पॉसिबल डेंजर्स हैं जो आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो आपको ख़राब करते हैं. फिर आप कर क्या सकते हैं इसके ऊपर? मेजर्स क्या अडॉप्ट करते हैं? अप्लाई प्राइवेसी सेटिंग, कीप योर इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिक्योर बाय अप्लाइंग पासवर्ड एंड सम मोर अदर थिंग्स. नेवर क्लिक ऑन अननोन लिंक एंड वेबसाइट्स. कुछ भी आता है आपके पास कोई ऐसा लिंक जिसको ओपन करने के लिए कहा जाता है, डोंट ओपन इट. और कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसके बारे में यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट व्हाट इज़ इन इट, don't try to open it if you don't need it. 13. Describe appropriate and inappropriate behavior while navigating digital environment. अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर कोई ऐसा नॉर्मल स्टूडेंट रीड करेगा तो उसको लगेगा कि इट्स रियली डिफ़िकल्ट टर्म, बट मैं आपको इसको इजी वर्ड्स में समझाती हूँ. इन ईजी वर्ड कि आपको कंप्यूटर पे किस तरह का जो आपका बिहेवियर है वो सही है और कौन सा वाला गलत है, किस तरह का होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और इसके इस क्वेश्चन का थीम कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर का. रिमेन फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल. कहीं भी बात कर रहे हैं तो फ्रेंडली रहें, रिस्पेक्टफुल रहें. जब तक कि वो पर्सन आपसे अच्छी तरह से बात कर रहा है, यू शुड बिहेव लाइक यू आर अ गुड सिटीजन, गुड पाकिस्तानी और गुड पर्सन हु इज़ यूजिंग द आईटी टेक्निक्स. नेवर हर्ट एनीवन्स थ्रू योर कमेंट्स. आपको लगता है कि ये एक चीज़ जो किसी ने पोस्ट की है आप इससे एग्री नहीं करते हैं, बट डोंट राइट नेगेटिव अबाउट दैट थिंग. डोंट राइट एनीथिंग लाइक दिस. स्टे पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव. स्टे पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने एक ऐसी चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ लेके जानी है, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स को डेवलप करना है ताकि जो भी कोई भी एक अच्छी चीज़ हो रही है, अगर आपको लगता है कि यू कैन जस्ट डू समथिंग गुड देन दैट थिंग, आप अच्छे कमेंटिंग से उसको जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. यू कैन डू. इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? पोस्टिंग मीन और थ्रेटनिंग टेक्स्ट और मैसेजेस, ये काम आप नहीं करेंगे. Causing embarrassment to others by posting pictures, creating a website, or revealing personal information publicly. Harassment and using the abusive language. That is. Abusive language पे तो definitely they always just block you and stop you on the spot. 14. Give any 2 examples of cloud computing, how internet is used for entertainment. ये 2 questions हैं. So we are just going to explain these 2 questions in one answer. Cloud computing क्या है? Is a technology that uses the internet and central remote servers to hold data and applications. Normally जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर ये क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क कर रहा है. दे आर सेविंग देयर फाइल नॉट इन देयर सिस्टम, they are saving in cloud computing so that anyone who is the part of that office and that NGO and that institution, they can just avail the opportunity to get access to their personal information or data related to that company anywhere
all over the world. You can just find out this thing. Examples: Think Free, Google Apps, Google Drive एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365. ये एग्जांपल्स हैं इसकी यहाँ पर. उसके बाद है इंटरनेट फॉर एंटरटेनमेंट. क्या है जो पीछे आपको मैंने यहाँ पर था कि हाउ इंटरनेट इज़ यूज फॉर एंटरटेनमेंट, इसको एक सेपरेट क्वेश्चन में बना दिया यहाँ पर हमने. तो इंटरनेट टू वॉच मूवीज़, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ स्पोर्ट्स, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन चैट, व्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग. There is a difference between vlogging and blogging. Vlogging mean to show your personal information in front of the audience, your personal activities, not information. And blogging mean if you write on some topics, that is called blogging. So 15 is what ethical consideration should be taken into the account when designing a solution to a problem. It's all about the entrepreneurship thoughts. आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप किस तरीके से एथिकल कंसिडरेशन शुड बी टेकन व्हेन डिज़ाइनिंग, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को जो है वो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन बाय कीपिंग यू इन योर माइंड अबाउट द एथिकल कंसिडरेशन. To ensure that the benefits of the study outweigh its potential harms, to ensure that no unnecessary harm is done by the study, and all actions abide by the law of the place where the study is conducted. Okay. This question is very important. What is meant by the denial of service, DOS, attack, right to measures that can be taken to protect ourselves from it? First of all, what is denial of service? Denial of service is a type of internet threat that floods a computer with data so it can't respond to any other request. इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स, इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम वो आपको सेंड कर दिए जाते हैं कि जिससे आपका सिस्टम जो है वो इस काबिल नहीं रहता कि वो कोई और काम कर सके. दैट इज़ डिनाइल ऑफ सर्विस. प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल फायरवॉल, रेगुलर अपडेट ऑफ सॉफ्टवेयर. लिस्ट एंड द वेज ऑफ यूजिंग इमेजेस इन मेज. आपको पता है हमने एक गेम की है स्क्रैच में, वी हैव डन दिस वन. उसमें हमने उसको डाउनलोड कैसे किया, उसको डाउनलोड तो करने के लिए आपके पास यू हैव अ लिंक इन योर बुक, वहाँ पर बहुत सारे मेज के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी. बट हमने उनको इंसर्ट करके कैसे करना है, कौन से वेज से हम उनको यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को जो काम कराया उसमें वी यूज्ड 2 मेथड्स. एज अ इमेज हमने उसको किया और एज अ बैकग्राउंड किया. तो एज अ इमेज जब हमने उसको किया तो उसमें ज़्यादा हमें बेनिफिट इस तरह से मिला कि यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली. आप उसके साइज़ को, आप उसकी वर्थ, उसकी लेंथ को according to your requirement you can do it, right? So by inserting an image and by inserting as a background you can do it. So write the steps to add movement code to the player. 19. If you want the sprite to move, then use the following code. When green flag clicked forever, if up arrow pressed, change Y. You know Y and X coordinates. Y और X coordinates matter करते हैं आपकी जो movement है उसके लिए आपने Y और X coordinate का इस्तेमाल किया है स्क्रैच में, जिससे आपको पता है कि आपने राइट और लेफ्ट जाना है तो X coordinate वर्क करता है, Y अप एंड डाउन के लिए आप Y के साथ काम करते हैं. तो यहाँ पर उसकी कुछ मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं. यू कैन नोट डाउन दिस आंसर एज वेल. राइट 3 steps to create new sprite in scratch. अगर आपने कोई scratch insert करना है, new sprite लेना है, तो what you are going to do? Click on choose sprite from option. Choose sprite from list according to your need. Insert and adjust the option position. Okay. After that, 21. What is meant by alignment? What are the 4 alignment options? Number 1. To set the position of heading, text and paragraph in the word is known as alignment. आपको पता है कि किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी वर्ड की अगर आपने पोजीशन सेट करनी है, आपने उसको सेंटर में लेके जाना है, आप अगर स्पेस से करेंगे तो वो एडजस्ट नहीं होगा. बट इफ वी आर यूजिंग द अलाइनमेंट ऑप्शन, यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली. टू सेट द पोजीशन ऑफ द हेडिंग, टेक्स्ट एंड paragraph in the word is known as an alignment. There are 4 kinds of alignments options. Number 1 is left, then right, then center and justify. What is the method to insert table in MS Word? Write the steps. Table को insert करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं. We use menu and secondly shortcut icon. 2 methods are available in Microsoft Word to insert table. Choose insert table from the insert menu and select the number of rows and columns. And second is choose number of rows and columns from the shortcut and make a table. 23. What is meant by the language processor, and also list its 2 types. The language processor is a special translator system that is used for turning a program written in a high-level language into machine code. There are 3 types of language processor: assembler, interpreter, and compiler.
create a brief tutorial on how to set up Visual Studio. Visual Basic पे हमने काम किया, हमने कैलकुलेटर डिज़ाइन किया, बहुत सारे काम उसके ऊपर किए, वो भी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला. So here is the steps. Here are some steps of this. Go to the Visual Studio website, download Visual Studio installer, run installer, select workloads and components, click install, launch Visual Studio. Then describe the use of the variables. Variables आपको पता है कि variables are used in all the programming. जहाँ पे भी आप बात करते हैं language की, वहाँ पे आपको variables का सामना करना पड़ता है. Variables are your changeable values, और ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं. These are the containers where you put all your values. तो a variable is a way to store the values. To use the variable, we must both declare it to let the program know about the variable and then assign it. To let the program know what value we are storing in the variables. How might you collaborate with others in design process, including team members, stakeholders, and users? Align your research goals with your stakeholders' goals. Run strategy meetings with stakeholders to understand their goals and establish the best ways to measure success. Then set a design vision and UX strategy before development begins, so everyone understand how to ensure good usability for the users. What is the difference between constant and variable? This is important question and important concept for the language. So variables are like containers or storage location of the data in computer memory, where the computer stores the different types of data. Constant are the value that cannot be changed during the sum. And these are the short questions and answer. I hope so कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एंड आई होप सो कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से करते हैं तो आप एग्जामिनेशन में गुड ग्रेड्स हासिल कर सकते हैं. इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं लॉन्ग क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, लेकिन उससे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड द हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री के एग्जामिनेशन शायद इससे पहले आ रहे हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड इट. थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस्ड.